Anyway, if there are no questions, should we move on to the doubly linear linked list? Okay. What is doubly linear linked list? In a doubly linear linked list, why it is called a doubly? Because now each node have got two pointers. One is pointed to the next node and is a pointer to the previous node. I would spend 5 minutes onto this linked list so that you understand the paperwork traps. मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि आई एम नॉट रियली ट्राइंग टू टीच यू द लिंक लिस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू डेटा स्ट्रक्चर, आई एम ट्राइंग टू टीच यू द मेथड ऑफ लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर. सो द बिगेस्ट हर्डल दैट आई हैव ऑब्जर्व कि लोग डायग्राम या तो गलत ड्रॉ करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, या तो डायग्राम लोग गलत ड्रॉ करते डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, या फिर उस डायग्राम को गलत इंटरप्रेट करते हैं. या तो लोग डायग्राम गलत ड्रॉ करते हैं या तो डायग्राम सही ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन उस डायग्राम का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग करते हैं. तो आई विल जस्ट गो अहेड एंड ट्राई टू ड्रॉ इट. Try to draw it. Let's say that this is one node. This is my one node, and in this one node, what all I need some data, and I need two pointers. One is pointed to the next node and pointed to the previous node. Let's say this is the first node, and as usual, the first node contains the address of the contains the address head contains the address of the first node. What I was trying to tell you is that this is a simple one, जहां पर हमारे पास अभी दो फील्ड नहीं है नोड के अंदर. नोड के अंदर हमारे पास टोटल तीन फील्ड है. पहला फील्ड है आपका डेटा, the second field is pointed to the previous node, and then another field is pointed to the next node. Okay, this is, let's say that, but this is like only one node. What about the next? And this way you continue further, you will be having second node, you will be having third node, you can be having fourth node, and so on and so forth. You can keep on drawing as many nodes as you need. You can keep on drawing as many nodes that you need. Let us just go ahead. So let's say this is 200 with the data 20, 300 node with the data 30. शायद मैंने कल भी बताया था, आज मैं वापस याद दिला दूं. एड्रेसेस सिर्फ आपको विजुअलाइज होने के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. वैसे तो एड्रेसेस देने का काम आपके कंपाइलर का है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है. वहां पर वैसे भी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है. 100, 200, 300 जस्ट टू मेक इट रीडेबल फॉर अस, वी आर जस्ट पुटिंग नंबर. रियल वर्ल्ड में आपको एड्रेसेस ऐसे राउंड फिगर में नहीं मिलते. आई होप आपको ये ऑलरेडी पता है. चलो, गेटिंग बैक. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट यहाँ पर ईच नोड कंटेन्स द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. ये पहले नोड के अंदर पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, दैट इज 200. सो 200, दिस नेक्स्ट पॉइंटर is pointing over here. Okay, that is good. And then 300, this pointer is pointing over here. That is also good. And then this one null, okay, last pointer is pointing to the null. That is good. But apart from that, I'm saying that each node contains the address to the previous node as well. I'm trying to draw the diagram in bit better way. I'm trying to draw the diagram in bit better way. If you could appreciate that. Yes, this is 200 and this is address of the previous node. This is address of the previous node. And this is, let's say, 100, which is again the address of the previous node. Again the address of the previous node, and now it is null, so which is pointing to this. अच्छा, लास्ट टाइम आपने ऐसे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया था. लास्ट टाइम शायद मैंने डायग्राम सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ किया था, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. तो सर वो गलत था क्या? नहीं, गलत नहीं था, बट टू माय ऑब्जर्वेशन मेनी टाइम पीपल गेट कंफ्यूज. वो जब प्रीवियस का पॉइंटर होता है, दे ऑलवेज फील दैट ये जो प्रीवियस का पॉइंटर है, इट इज पॉइंटिंग टू दिस. I want to make a point over here. The previous pointer is not pointing to this. The previous pointer is not pointing to this. The previous pointer, where it is pointing to, the previous pointer is pointing to the previous node, the base address or the starting address of the previous node. So this diagram, even though we draw it usually like this, you need to keep in mind कि ये उसके next को point नहीं कर रहा है. It is not pointing to this. It is pointing to the whole node.
It is pointing to the whole node. And just to make it a bit more readable, probably this diagram should look ideally like this. Ideally like this, but trust me, drawing a diagram like this, makes paperwork very cumbersome. So usually जब भी हम लोग यहाँ से आके काम करेंगे, मैं ऐसा वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ. बट अंडरस्टैंड दैट द मीनिंग ऑफ डायग्राम इज दिस. मैं फिर से बता रहा हूँ. द नेक्स्ट नोड, the next is pointing the address or the starting address of next node. And when you say previous pointer, the previous pointer is again starting address of the previous node. Don't forget that. Don't forget that. Is this clear to you? Is this clear to you? सो जब भी हम लोग कोड करेंगे, जब पेपर वर्क करेंगे, तो ये गलती आप लोग करने वाले हो, 100% करने वाले हो. तो वो एट दैट टाइम इसको याद रखना, इसको भूलना मत. तो सर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट? सर वो सिंगल लिंक लिस्ट इतना अच्छा था, एक पॉइंटर से हमारा काम हो रहा था. तो सर डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना के आप क्या अचीव कर रहे हो? नॉट रियली मच. डब्ल्यू लिंक लिस्ट करके वी कैन ट्राई टू traverse in both the direction. If we can traverse from first node to last node, and we can also traverse from the last node to first node. We can traverse from the first node to last node, and we can and we can also traverse from the last node to first node. हम लोग दोनों तरफ से traverse कर सकते हैं. That is possible with the doubly linear linked list. तो सर हेड पॉइंटर लगाते हैं या हेड और टेल दोनों पॉइंटर लगाते हैं? Again, choice is yours. You can make a doubly linked list with the only head pointer. You can make a doubly linked list with head as well as tail pointer. तो सर हमें कौन सा करना चाहिए? It depends on your requirement. I'm going to keep it simple. I'm going to create a doubly linked list with the head pointer only. With the head pointer only, and I'm going to make my diagrams super simple. Super simple, something like this. The head node pointing to 10, it is pointing to 20, it is pointing to 30, it is pointing to null. At the same time, 30 previous is pointing to this pointing to this. That's it. So drawing this diagram is actually, I want to draw this diagram only. This diagram only. So you just understand that if you are done enough of paperwork, you should not really have a trouble. आपको हर बार इतने 100-200 लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ती है. Anyway, so जहां पर आपको algorithm में लेकिन problem आएगा, it is recommended that you draw then detailed diagram with address diagram so that you can visualize it better if at all you find it any troublesome. But trust me, जिसने सिंगली लिंक लिस्ट को ठीक से प्रैक्टिकल किया है, पेपर वर्क ठीक से किया है, मैं तो कहता हूँ हर एक फंक्शन का 5-5 बार किया है पेपर वर्क एंड कम अप विद द कोड, प्रोबेबली यू नेवर नीड टू लर्न द रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. मैं लिस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो सिलेबस में है, अदरवाइज वो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है. जिसको एक लिंक लिस्ट आ गया उसको सारे लिंक लिस्ट आ गए, बिकॉज डूइंग लिंक लिस्ट is nothing but doing a pointer management. It's a pointer management technique. Once you understand it for one linked list, you understood it for all linked lists for all data structures. Chalo, let us go ahead and let us first do some primary changes and then we will start with the functions one after another. तो primary changes क्या है? Primary changes क्या है? I'll go ahead and again we need to write it from scratch. So I'll create a new project. File new. Oh, sorry. File new project. File new project, Java project. Okay. I'm calling it as a doubly list. Okay, it's a doubly list. I can say next. I can say finish. Done. Going well. In a doubly list, in a doubly list, I want to create a new class. New class, let's say in a package sunbeam. And what I want to write is that doubly list main. Okay, doubly list main SE. And inside that, I want to write a main function. Write a main function. अब वो डेटा एंट्री वाला कोड मैं वापस से नहीं ले रहा हूँ. So that code I'm just copy pasting. We will do the necessary changes if it is needed. तभी तक के लिए मैं इसको सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ and I'm just getting the basic skeleton program from there. Go ahead. What is next job to be done? I need to create a class. Okay, I'll create a class of a doubly list. I'll create a class of a doubly list.
हाउ डू क्रिएट अ क्लास ऑफ डब्ल्यू लिस्ट क्लास, ए उसका सिंगली लिस्ट क्लास बनाया था, इसका मैं क्लास बता रहा हूँ डब्ल्यू लिस्ट क्लास. ओके गुड. एंड इनसाइड डब्ल्यू लिस्ट व्हाट यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल नोड क्लास, you need the list class fields, that is good, and you need list class methods. It will be good if you people can participate. Node class, ये node class हमारा कैसा होना चाहिए? नोड क्लास कैसा होना चाहिए? हाँ, नेस्टेड हम लोग बनाते हैं ताकि उसके प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सके, बट यस वी से दैट वी वांट टू मेक इट अ स्टैटिक मेंबर क्लास. तो स्टैटिक क्लास डब्ल्यू लिस्ट, static class w list, and then now you want to declare the node class fields over here. Sorry, we want to declare node class and node class fields over there, and then node class methods over there. All right, so node class fields, let us go ahead. The node private node, first of all private int data. I got the data. What is second? I want pointer to the next as well as pointer to the previous. Data plus next plus previous. Oh yes, go ahead. Private node next, that is good, and next private node previous. Oh, that is going good. We have got data, we have got previous. सर ये ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अब किसी भी ऑर्डर में डेटा मेंबर डिक्लेयर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बाय द वे, तो फिर कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन करेंगे. क्या इनिशियलाइजेशन करेंगे? ऑब्वियसली डेटा इज कंसिडर्ड टू बी जीरो ओवर हियर, next is initially null, and previous is also equal to null. All right, by the way, what about parameters constructor? Oh, you can always write the parameters constructor, and it is again doing something similar job. Oh, this is going well. There's nothing much to be done into this. Going well. What is next job to be taken care? Next job to be taken care, the list class fields. A list class का field क्या होगा हमारा? List के अंदर क्या होता है? Yes, it is only head pointer. अभी तो हम लोग tail नहीं कर रहे हैं, so it is hardly private node head. And then what should be the initial value? So within a constructor, what should be initialized? I should make head is equal to null. You must have seen that code almost similar है, सिर्फ एक change हुआ है, per node हमने एक और pointer add कर दिया. That's it. That is good enough. Let us continue further. Let us continue further. अब आपको क्या करना है? मैं जो बता रहा हूँ उसको ठीक से सुनो. Doubly linear linked list is quite similar to the singly linear linked list. Doubly linear linked list is quite similar to the singly linear linked list. सिर्फ सिंगली linear linked list में हर एक नोड के अंदर हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता था. हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता था. अब यहाँ पर हमारे पास हर एक नोड के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर भी है, हर एक नोड के अंदर हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर भी है. तो एवरी टाइम वी डू द कोडिंग, वी नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स. नेक्स्ट का भी हमें केयर करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमें प्रीवियस का भी केयर करना पड़ेगा. आई रिपीट वंस अगेन, एवरी टाइम हमें दोनों केयर करने पड़ेंगे. हमें नेक्स्ट का भी केयर करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमें प्रीवियस का भी केयर करना पड़ेगा. सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से? What exactly I'm trying to say, let's just go ahead and you understand when you do it practically. Let's say for example, you start writing your first function, public void display. तो सर डिस्प्ले फंक्शन में कुछ चेंज होगा क्या? डिस्प्ले फंक्शन में कुछ चेंज होगा क्या? Let us go through the diagram. Let us make a diagram and try to visualize whether I need any change for the display function with respect to the singly linear linked list. आप सर्कुलर के बारे में मत सोचो, सर्कुलर जो आपने पढ़ा था उसको भूल जाओ and focus on a singly circular linked list. So head is pointing to the node 10, and then we have got node 20, we have got node 30, and we also have got node 14. This is pointing to this, this is pointing to this, this is pointing to this, this is pointing to null. This is pointing to this, previous is pointing to this, previous is pointing to this, and this is pointing to the null. अगर मुझको ये लिंक लिस्ट डिस्प्ले करना है तो अभी भी मेरे को आउटपुट क्या चाहिए? 10, 20, 30, 40. तो इन दिस पर्टिकुलर केस मुझको क्या करना पड़ेगा? What should be my logic? My logic should be start from the first node, trav is equal to head, print this,
print trav data, go to the next node, print this data, go to the next node, print this data, go to the next node, print this data, last वाला iteration करना है, print this data, and then oh, अब कुछ नहीं करना है, I want to stop. When I want to stop, probably when I reach null. So what code probably I want to write it? I want to write it very simple code, simply saying that I need to begin with head. I need to begin with the head. I need to print. I need to print Trav's data. I need to print Trav's data, and then I need to simply go ahead. Trav is equal to Trav's next. Trav is equal to Trav's next, and then I want to repeat it again and again. And then I want to repeat it again and again. I want to repeat it again and again. I want to repeat it again and again. Okay, that is good. But ये कब तक repeat करना है? ये कब तक repeat करना है? What is the condition? हमें कहाँ पर रुकना है? फिर से एक बार आप लोग गलत कंडीशन प्लीज मत बताओ. सी, डू द पेपर वर्क. नहीं है समझ में आ रहा है, रट्टा मत मारो, डू द पेपर वर्क. गो अहेड. ये पहले ट्रैविस इक्वल टू हेड है. क्या हमें 10 प्रिंट करना है? डेफिनेटली प्रिंट करना है. सो लेट अस जस्ट प्रिंट 10 एंड देन ट्रैविस इक्वल टू ट्रैविस नेक्स्ट. क्या हमें रिपीट करना है? क्या हमें ये इटरेशन रन करना है? डेफिनेटली करना है. 20 is to be printed. So again, go ahead, print 20, print 20, and go to the next node. Or going to the next node, again I'm saying that Travis equal to Travis next. You want to repeat, फिर से एक बार क्या हमें ये लाइन प्रिंट करनी है? Absolutely print करनी है. You print 30, and again Travis equal to Travis next. You go to the next node. Not a problem. ये लाइन प्रिंट करनी है. अरे लूप इटरेट करना है अभी. ये करना है ना? डेफिनेटली करना है, क्योंकि अदरवाइज 40 प्रिंट ही नहीं होगा. सो 40 प्रिंट नहीं होगा. गो अहेड, प्रिंट दिस. A go ahead, print this means I have to repeat this once more. So trav dot data 40 is printed, and again you are saying that trav is equal to trav's next. A trav is equal to trav's next. अब trav is equal to trav's next. A what trav is equal to trav's next become? अभी trav क्या बन गया? अभी trav क्या बन गया? नल बन गया. अब मुझको रिपीट करना है क्या? अब मुझको रिपीट करना है, नहीं करना है. So what should be my condition? What should be my condition? While trav is not equal to null. That is the reason I'm saying that. आप लोग प्लीज रट्टा मत मारो. अभी ये तीसरा लिंक लिस्ट हो रहा है और मैं हर बार एक ही चीज बता रहा हूँ और आप लोग वापस से वही गलती कर रहे हो. दैट इज रियली गुड. यू नो, अच्छी बात है. चॉइस इज यूअर्स, बट आई सजेस्ट कि एक गलती बार बार मत करो, हर बार नई वाली गलती करो. यू नो, दैट इज गुड. हर बार नई गलती से करने से इंसान ज्यादा सीखता है. अगर एक ही गलती अगर आप लोग बार बार करोगे तो आप लोग ज्यादा सीखोगे नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड. Anyway, let us just go ahead and I want to print the list. So I want to print the list. Node trav. Trav is equal to head. Okay, that is good. While trav is not equal to null. Okay, and then I want to print trav dot data. All right, and then go to the next node. Then go to the next node. That is sufficient. So will it work? Yes, it will work, and it will 100% work. But रुको, what is the advantage of having a doubly linked list? The advantage of having doubly linked list is that I can traverse in a forward direction. At the same time, I can traverse in a backward direction as well. अगर आप लोग दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हो, अगर आप लोग दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हो, why to write a function only for display in a forward order? I do recommend that जब भी आप लोग डबली लिंक लिस्ट के साथ काम करोगे, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो 100% whenever you do that, you always write the code twice. एक बार फॉरवर्ड डिस्प्ले का अलग से फंक्शन लिखो, फॉरवर्ड डिस्प्ले का अलग से फंक्शन लिखो, and also try to write a separate function for displaying in a reverse order. I recommend go ahead and write two different function. One for traversing in a forward direction and another for traversing in a reverse direction. So sir, how do I write that code? Let us go ahead. By the way, ये जो कोड था, this was simply the forward
display. What about I want to make like a reverse display? You want to make a reverse display? Why don't you draw on the diagram just to see what all you need to do when you want to display in a reverse direction? आपके पास टेल पॉइंटर नहीं है, आपके पास सिर्फ हेड पॉइंटर है, इसको मत भूलना. अगर आपके पास सिर्फ हेड पॉइंटर है और अगर आपको रिवर्स डिस्प्ले करना है, मतलब आई एम लुकिंग फॉर आउटपुट एज 40, 30, 20 and 10. Now what should I do? Now having a pointer to the first node, that is possible. I do not have a pointer to the last node. अगर मुझको रिवर्स प्रिंट करना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको पहले क्या करना पड़ेगा? First of all, I need to go to the last node. I hope you are getting my point. So very first step, is that traverse till last node. Please note, I don't want to go on to the null. I want to go to the last node. I do not want to go to the null. I want to go to the last node. So पहला question, is this a last node? Is it a last node? No. Go to the trav is equal to trav dot next. Is it a last node? No. Trav is equal to trav dot next. Is it a last node? No. Trav is equal to trav dot next. Is it a last node? Is it a last node? Yes. I want to stop there. What should be my condition? Yes, absolutely. Now you see that the condition looks very much clear when you are done a paperwork. So your code is not at all difficult. All I need to do is that you can start with the trav is equal to head, and while trav's next is not equal to null, you can simply say trav is equal to trav's next. So what I'm doing, अगर आपको रिवर्स डिस्प्ले करना है तो पहले आपको लास्ट नोड के ऊपर जाना पड़ेगा. So first of all, I need to traverse from the first node till the last node. So I traverse from the first node to the last node. What is like a second step? What is second step? अब क्या करना है? I guess now you start printing it, no? Now you actually start traversing it. What all logic that you need? Oh, I need to print that data. Go ahead. You want to print that data. A trav.data is to be printed. चलो trav.data तो print हो गया, but trav.data print हो गया मतलब 40 print हो गया. कोई मुझको बताएगा अब क्या करोगे? A 40 print हो गया. What is to be done? Now I want to go to the previous node, 30 node. How do I go to the previous node? मैं भी 40 के नोड पे हूँ. 40 के नोड से मुझको 30 के नोड के ऊपर जाना है, तो 30 के नोड के ऊपर मैं कैसे जा पाऊंगा? Absolutely, I can go by saying trav is equal to trav dot previous. A trav is equal to trav dot previous. This will take me to the previous node. सर ये प्रीवियस नोड के ऊपर आने के बाद में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जस्ट रिपीट करना है. You want to put it in a loop, you want to repeat it once again. Yes, definitely. I want to print this. So you are repeating it once again on a second iteration. You print this and again you say trav is equal to trav's previous. Now when the second iteration you are saying that now a trav का previous अब ये कहाँ पर जाएगा? 30 से it will go on to the 20. It will go on to the 20 and go ahead. It will repeat the loop once again. Yes, I want to repeat the loop, no doubt on that. You want to repeat the loop, continue. Printf trav data. A printf trav data, you print this as well. And now you say that again trav is equal to trav previous. Yeah, again trav is equal to trav previous. Definitely, I want to go to the previous node. Should I repeat this once again? एक इटरेशन और करना चाहिए 100%, क्योंकि अभी तक 10 प्रिंट नहीं हुआ है. I have to still continue. I can simply say that printf trav data. That will print 10 also. 10 print हो गया. 10 print होने के बाद में trav is equal to trav's previous. What is that? Trav is equal to trav's previous. What is that? Now it will take me to the null. Oh, it is taking me to the null. And now next iteration चाहिए? नहीं, I want to stop it over here, right? अभी यहाँ पर रुक जाओ. अगर आपको यहाँ पर रुकना है, have a look at this. अगर आपको यहाँ पर रुकना है, what is your condition? Where you stopped? Oh, I stopped when trav become null.
So you go ahead, you simply say trav is not equal to null. A trav is not equal to null. So this is my entire code. So I'm saying that, so it's a two-step process. Pehla step है traverse till the last node, and then traverse and print each node in reverse direction. A reverse direction, all these efforts I need to take. So let us just go ahead and try to do it practically. That is what a code. This is like a reverse display code that we are trying it. Let's go ahead and do it. So I'm looking for printing in a reverse direction. So reverse list. So first step, what is the first step? First step is traverse till last node, and then print all nodes in reverse direction. Chalo, you want to traverse till last node? Traverse till last node. How do we do that? So while trav.next is not equal to null, while loop के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, मैं करली ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूं. So trav is equal to trav.next. That we have done, and then you start printing it all in a reverse direction. So you print it and you go to the trav.previous. That's it. So this will print both display in a forward order as well as display in reverse order. What I will do is that जहां जहां पर मेन में मुझको प्रिंट करना होगा, I would prefer taking it in both ways. कौन सा? Forward as well as reverse both. I'll prefer that. So this is my doubly linked list. Doubly linked list is equal to new doubly linked list. All right, and inside this I'll print it both the forward as well as display in like a reverse. So that's it. Should I like that? Should I like that? Trav.previous is equal to trav.next. Trav.previous is equal to trav.next. Are you trying to modify the previous address? Please note Ekansh, जब लोग previous कहते हो, previous means you're talking about this part. Previous means you're talking about this part. And if you're talking about this part, जब आप लिखोगे trav.previous is equal to trav.next, what you're basically doing, whatever is the address inside this address, you are actually writing it over here. So this will become 0. Is it what you want to do? Have you got the point? See, if this is trav, I'm repeating once again. If you return trav.previous is equal to trav.next, what will happen? Trav.previous. Trav.previous is nothing but this pointer. Trav.next is nothing but this pointer. What you're doing, you're assigning this pointer over here. So ultimately, this will become 300. This will become 300. Is it what we want to do? No, not at all. We do not want to do this. So whatever statement that you are writing, it doesn't make any sense at this context. Write in a reverse order. Write in a reverse order in the sense, अभी भी हम लोग रिवर्स प्रिंट ही किया है. हम लोगों ने अभी भी रिवर्स प्रिंट ही किया है. So अगर आपको रिवर्स प्रिंट करना है, you want to go to the previous node, and to go to the previous node, the simple, जैसे हम लोग कहते थे trav is equal to trav.next, it was taking me to the next node. Simply say trav is equal to trav.previous, it will take you to the previous node. It's very easy. Okay. If you still have any confusion, please wait after the lecture. We can try to sort out there, right? No issues. हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे. Doubly linear linked list, or sorry, हाँ. So we are saying that there are both ways displays are available, forward display as well as a reverse display, और ये दोनों logic हम लोग लिखे हुए हैं. Now it's time. Reverse order is done. So forward भी हो गया, reverse भी हो गया. Let us continue further. Now let us think of, तो सर अगर हमें नोड ऐड करना है लिंक लिस्ट में, तो क्या हमें कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे? In my opinion, you need to just take extra efforts जो हम लोगों ने, जो हमको previous pointer के लिए चाहिए. We have to take few extra efforts for the previous pointer. Otherwise, most of the time जो आपका singly linked list का जो कोड था, singly linear linked list का जो कोड था, वो as it is चलना चाहिए, as it is चलना चाहिए.
Let us go ahead. Let us try to draw the diagram. And by the way, ये doubly linear linked list है. This was basically the display operation that we were discussing. And after the display operation, now I'm talking about operation, add last operation. So get ready. So for the add last operation, you start with, this is head pointer. Let's say pointing to the 10. 10, it is pointing to 20. This pointing to 30. This pointing to 40. And this is pointing to the next. Okay, that is good. 40's previous is pointing to 30. 30's previous is pointing to 20. 20's previous is pointing to 10. And 10's previous is again pointing to null. This is my doubly linked list. Again, first draw the diagram and ask question to yourself कि डायग्राम में पहले क्या चेंज होना चाहिए. पहले डायग्राम के चेंज समझो, ऑटोमेटिकली बचे हुए आ जाएंगे. So very first thing, you want to create a new node. You want to create a new node and you want to initialize it. Don't forget that इसका next और previous दोनों null null रहने वाले हैं. जब इनिशियली हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, अपने नोड के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, नेक्स्ट को नल किया, अपने प्रीवियस को भी नल किया है, सिर्फ अपने डेटा यू हैव इनिशियलाइज्ड इट टू द वैल्यू 50. दैट इज डन. व्हाट इज नेक्स्ट जॉब टू बी डन? अब डायग्रामेटिकली कैन यू प्लीज टेल मी, डायग्रामेटिकली कि मुझको यहां पर अभी क्या करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. What should happen if you want to add a node at the end? If you want to add a node at the end, diagrammatically what should happen? हाँ, न्यू नोड का नेक्स्ट वैसे भी नल ही आने वाला है, न्यू नोड का प्रीवियस भी नल ही आने वाला है, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे ही होने वाला है. हमें आगे क्या करना है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ट्रैवर्स टिल द लास्ट नोड. यस आई एग्री, आई नीड टू ट्रैवर्स टिल द लास्ट नोड. चलो यू ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड, बट आगे करना क्या है? व्हाट आई वांट टू डू द नेक्स्ट, चेंजेस क्या क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड, देन नेक्स्ट नोड ट्रैव के नेक्स्ट में, ट्रैव के नेक्स्ट में अभी तो नल है, तो उसके नेक्स्ट में हमें न्यू नोड चाहिए. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रैव के नेक्स्ट में हमें न्यू नोड चाहिए. करेक्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? इतना काफी है? लुक एट द डायग्राम. Is it sufficient? Not really. We need something extra. The new nodes previous, a new nodes previous also should point to the trav. Also should point to the trav. अगर आप लोग आपका कोड कंपेयर करते हो सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट का, सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर हमने क्या कोड लिखा है? सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर हमने कोड लिखा है, ट्रैव को लास्ट नोड तक लेके जाओ. दैट इज फर्स्ट स्टेप. फिर ट्रैव के नेक्स्ट में न्यू नोड लिखो, दैट इज ऑल्सो रिटर्न. वन लाइन एक्स्ट्रा दैट यू नीड, a one line extra you need. Which one line extra you need? न्यू नोड के प्रीवियस में ट्रैव आना चाहिए. ये छोड़ के आपको कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट. मैं फिर से बार बार बताऊंगा, आपको बुरा लगे, अगर किसी को बुरा लग रहा है, स्पेशली बुरा उन लोगों को लगेगा शायद जिन्होंने कल पढ़ाई नहीं की है. ठीक है, अगर आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. दैट वाज द रीजन आई वाज सेइंग दैट कि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, और लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके बाद में जो आपने करना चाहिए था पेपर वर्क, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज मोर एंड मोर पेपर वर्क दैट यू आर डन विद द सिंगल लिंक लिस्ट, यू रियलाइज दैट अरे यहाँ पर अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे. वापस से ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड, सेम कोड एज ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट. गो अहेड, ट्रैव के नेक्स्ट में न्यू नोड ऐड करो, सेम कोड एज ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट. लास्ट स्टेप, न्यू नोड के प्रीवियस में ट्रैव को ऐड करो. दैट्स इट. हाँ, so today is implementation of yesterday's lab work. I see. Exactly, something like that only. Anyway, तो चलो हम लोग आगे जाते हैं. पब्लिक वॉइड, मैंने आपको कल ही बताया था कि आपका इस साल का, नए साल का गिफ्ट है लिंक लिस्ट. सो समथिंग दैट यू कैन एंजॉय. एनीवे, एट लास्ट इज इक्वल टू इंटीजर वैल. एंड व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्यों लिख रहा हूँ वापस से, आई डू नॉट रियली वांट टू वेस्ट टाइम. सिंगली लिंक लिस्ट, एट लास्ट फंक्शन, कंट्रोल सी, नहीं नॉट दिस वन, ये टेल पॉइंटर का कोड है ना, टेल पॉइंटर वाला कोड नहीं चाहिए. कल का जो हम लोगों ने बेसिक लिंक लिस्ट जो बनाया था, मुझको वो वाला कोड चाहिए. एंड आई वांट टू कॉपी दैट कोड. वो कोड कहाँ पर है? डे 2 के अंदर है, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर है. ओके, हाँ ये रहा आपका एटलस का कोड, एटलस कोड. एंड समवन यू जस्ट कॉपी, you go back, you say paste. So linear linked list का बेसिक कोड हो गया है.
Now what is the extra thing to be added? Just say that the what is that, new nodes, new nodes previous to last node in the sense trav. So all I need to do is that new node dot previous is equal to trav. खत्म हो गया, the code is over. सर ये काम करेगा? करेगा मतलब करना ही चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता. You just go back, add last. Okay. Oh sorry, I run the previous code. Let me run it once again. Right click, run as Java application. I see that. Chalo add last 10. Okay, add last 20. Add last 30 and display. A display linked list is displayed in a forward order 10, 20, 30. Linked list is displayed in a reverse order 30, 20, 10. Is it working? Absolutely. Why don't you try it? Check it. Good, Akshay. I'm waiting. Take a code, copy paste it, run it, check. As I said that already आपके पास सारे कोड है, सिर्फ हम लोग छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं. So अभी तक जितना कोड किया है, जब तक आप लोग कोड कर रहे हो मैं सिर्फ रनिंग कमेंट्री दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं. अभी तक जितना कोड आप लोगों ने किया है उसमें हमने चेंजेस क्या क्या किए हैं. यू सी द फर्स्ट लाइन ऑफ चेंज, क्लास नोड के अंदर हमने नोड प्रीवियस ऐड किया, दैट इज वन चेंज. उसके बाद में उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रीवियस इज इक्वल टू नल, प्रीवियस इज इक्वल टू नल लाइन्स ऐड किए. दीज आर लाइक एडिशनल चेंजेस. देन यू कंटिन्यूड फर्दर. डिस्प्ले फॉरवर्ड हमारा पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो दैट कोड इज ऑलमोस्ट सेम, दैट इज सेम, नो चेंज. डिस्प्ले रिवर्स का कोड हम लोगों ने यहाँ पर नया ऐड किया. एंड देन वी आर गोइंग विद द एडलास फंक्शन. एडलास फंक्शन में हमने नया कोड क्या किया है. इन एडलास फंक्शन वी आर सिंपली सेइंग दैट कि जैसे लीनियर लिंक लिस्ट का कोड था वही कोड हमने कॉपी पेस्ट किया. और कॉपी पेस्ट करने के बाद में न्यू नोड के प्रीवियस में इज इक्वल टू लास्ट इन द सेंस ट्रैव. दैट इज द ओनली थिंग वी हैड डन, नथिंग एक्स्ट्रा इज डन देयर. Okay, I'm just going back. Someone has got trouble. I'm just going back to the reverse function. आप लोग तब तक करो चाहिए तो. I'm just repeating the reverse function, reverse नहीं, reverse display function. हम लोग लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रिवर्स डिस्प्ले कर रहे हैं. तो व्हाट इज रिवर्स डिस्प्ले फंक्शन? ऑल वी आर डन. रिवर्स फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, आई एम जस्ट गोइंग अहेड. अगर आपको रिवर्स डिस्प्ले करना है तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए? मेरा आउटपुट होना चाहिए 40, 30, 20 एंड 10. मेरा आउटपुट होना चाहिए 40, 30, 20 एंड 10. ओके, अगर आपका आउटपुट होना चाहिए 40, 30, 20, 10, टेक अ लुक एट दिस. व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू फर्स्ट go to the last node. How do I go to the last node? You start with trav is equal to head. Hey, this is not last node. You go to the next. Trav is equal to trav next. This is not last node. Trav is equal to trav next. This is not last node. Trav is equal to trav next. This is the last node. So we have just written a piece of code where we are saying that trav is equal to head, while trav dot next is not equal to null. Trav is equal to trav dot next. ऐसे करते 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 we have reached till the last node. लेकिन अभी मुझको करना क्या है? I have to print all the nodes in a reverse direction. So right now, where is the trav? Right now the trav is at the end. Now if the trav is at the end, what all I need to do? What all I need to do is that I need to simply I need to simply print that node and then go to the previous node. I have to simply print that node and go to the previous node. I have to simply print that node and go to the previous node. Correct? So you just print that node and go to the previous node by saying trav is equal to trav dot previous. And you want to keep doing this, and you want to keep doing this, and to keep doing this while trav is not equal to null. While trav is not equal to null, that's it. Nothing extra we need to do. I hope Ashraf it is clear, right? All right.
If atlas is done, and if you understood that, let us move further and talk about the next one. Next one is, let's say, add first function. तो सर add first में क्या लॉजिक लगाना है? Let us first draw the diagram and then we will think of logic क्या लगाना है, बाद में देखते हैं. So again we have got a head 10, 20, 30, 40. Okay, this pointing to the previous, this pointing to the previous, this pointing to the previous, this pointing to this. Okay, all done. अब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, you want to add a node at the previous, early add करना है. Early add करने के लिए obviously you want to create a new node and you want to initialize that node. Yes, you want to create a new node, you want to initialize that node. By default इसका next और previous null null रहने वाला है. Look at the diagram and tell me which all changes that you need. Look at the diagram, tell me which all changes that we need. What all things that we need to do in this case. हमें दो चीजें देखनी है, एक तो इसके अंदर चेंजेस क्या है, ये पहली चीज, और दूसरी चीज हाउ इट इज डिफरेंट देन द सिंगल लिंक्ड लिस्ट. सो यस, एब्सोल्युटली राइट. न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड. यस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. व्हाट इज सेकंड? आई गेस इतना काफी नहीं है. न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, इतना काफी नहीं है. लुक एट द डायग्राम. द डायग्राम शुड आल्सो से दैट हेड एरो प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड. yes, head arrow previous, head dot previous, arrow cc pluses में होता है. head dot previous is equal to new node. That is done. And what is third thing? ये add first है. तो head should always point to the first node. That is in front of you. Nothing extra or nothing special I need to do with this. Done. So there are 3 steps to be followed. Step number 1, 3 nahi, actually 4 steps. Step number 1 is that you want to create a new node. And you want to initialize it. That is good. Second step, new nodes next should point to this head. That is okay. Third step, that is head's previous is pointing to the new node. And the fourth step, you say that head is equal to new node. इसके अलावा कुछ नहीं करना है. कैन यू प्लीज टेल मी, इसमें से कौन सा स्टेप आपके सिंगली लिंक लिस्ट के कोड में नहीं है? इसमें से कौन सा कोड आपके, ये सिर्फ स्टेप नंबर 3 नहीं है. मैं फिर से वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ प्रीवियस के पॉइंटर के लिए जो एक्स्ट्रा स्टेप था, दैट इज द ओनली स्टेप मिसिंग. रेस्ट एंटायर कोड इज स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम. इट इज जस्ट अगेन अ पॉइंटर मैनेजमेंट. तो चलो जाते हैं पीछे. एड फर्स्ट वहां से उठाते हैं और एड फर्स्ट यहां पर आके लगाते हैं. मैं वहां से एड फर्स्ट उठाया, यहां से एड फर्स्ट उठाया और यहां पर आके इसको डाल दिया. ओके, ऑल राइट, इट इज देयर. एंड देन सो क्रिएट अ न्यू नोड, ये स्टेप ऑलरेडी था. न्यू नोड नेक्स्ट शुड पॉइंट टू द हेड, ये भी ऑलरेडी था. हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये भी ऑलरेडी था. ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट इज दैट न्यू नोड्स प्रीवियस टू हेड, and all I can do is that new node dot previous is equal to head. That's it. So will it work? Yes, it will work. But any special cases to be considered in this case? Any special case to be considered for this? Atlas के लिए हमको शायद चेक करना चाहिए. Another special case to be checked. The special case, if linked list is empty linked list, if head is equal to null, what is to be done? In this case, if list is empty, this is a special case. If list empty, करना क्या हो तो बताओ. लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, नया नोड क्रिएट करेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट इज नेक्स्ट जॉब टू बी डन? इन दिस केस आपको सी हैव अ लुक एट दिस. इन दिस केस हेड का प्रीवियस आप लोग वैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते हो. ये जो स्टेप नंबर 3 है, द स्टेप नंबर 3 इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज हेड ऑलरेडी आपका नल है. तो हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल. दिस पार्ट is going to fail. It is going to give you null pointer exception.
तो सर क्या करना चाहिए? वैसे इस केस में करना क्या चाहिए? दैट इज द स्पेशल केस, नो डाउट ऑन दैट। इस स्पेशल केस में करना क्या चाहिए? Obviously, this node itself will become your first node. This node itself will become your first node. Then simply say that new node is first node. That is what all you need to do. And if you want to do this much, just go ahead and write there the one extra special case. So special case, if list is empty. If list is empty, do the needful. So I can simply check if head is equal to null. और एक काम करते हैं, वापस से जैसे हम लोगों ने इससे पहले इज एम्प्टी का फंक्शन लिखा था, वी कैन ऑलवेज राइट जो हम लोगों ने उसमें लिखा था वैसे हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, पब्लिक बूलियन इज एम्प्टी, जस्ट टू मेक इट मोर रीडेबल, बाकी कुछ नहीं है. रिटर्न हेड इज इक्वल टू नल. इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल रिटर्न ट्रू, इफ कंडीशन इज फॉल्स इट विल रिटर्न मी फॉल्स. So you go ahead, you check if is empty. If is empty, just simply say head array head is equal to new node. Head is equal to new node. Otherwise the general case where you want to add the node at the beginning. This general case where you want to add the node at the beginning. Chalo, go ahead, copy paste, run it and check if it is working for you. Shubham is asking the question, why new node dot previous is equal to head in general case? Wait for a minute. Let me first write it and I'll come back to that. General add node at the start. Okay, this is done. At first we have done. Let me check whether it is working. रन करके देखता हूँ और उसके बाद में आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ. 2 add first 10, 2 add first 20, 2 add first 30, 10 उसके पहले 20 उसके पहले 30 and then you say display 30 20 10, that is working well. You find that reverse list there is something problem. Reverse list something there is a problem. We have missed something or something like that. We can check it. And that is the reason I told you, please go ahead and print in both direction. क्योंकि you know forward direction वाला कोड हमेशा चलता है, रिवर्स डायरेक्शन वाला कोड यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं. और हाँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, कॉपी पेस्ट के बाद में एक स्टेप अपना रह गया था क्या? ओ सॉरी, माय मिस्टेक. न्यू नोड्स प्रीवियस टू हेड नहीं, माय मिस्टेक. जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो अलग था. मैंने एक्सप्लेन क्या किया था आपको? What was the explanation? In this case, what should happen? This should happen. What is this? What is this? Heads previous. The heads previous should point to new node. Heads previous should point to new node. So you know हो जाता है. So I'm saying that heads previous to new node that was required. So that was my actually flow में मैं भूल गया कहीं पर, तो कोई बात नहीं. Done. I hope not an issue. आई गेस यही चीज शुभम या कोई तो पूछ रहा था. हाँ, यस शुभम, जानवी, आई गेस यस यू आर आस्किंग द समथिंग सिमिलर, राइट? या दैट वाज माय मिस्टेक. चलो चेक करते हैं, इज इट गोइंग वेल? 3 नहीं 2 एट फर्स्ट 10, 2 एट फर्स्ट 20, 2 एट फर्स्ट 30. डिस्प्ले, oh now it is working well. 30 20 10 और रिवर्स में 10 20 30 it is going correctly. दिस वॉज माई मिस्टेक. मैं फिर से एक बार डायग्राम में जाता हूं. हमें यहाँ पर क्या करना है? न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डालना है, नो डाउट. और जनरल केस में हेड के प्रीवियस में न्यू नोड डालना है. सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट वहां पर लिखते वक्त शायद ये मैं किसी फ्लो में गलत कर गया. आई नीड टू गो एंड से दैट हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड. हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड. चलो प्लीज गो अहेड, ट्राई इट एंड कंफर्म. Okay, no problem.
If your list is empty, if your list is empty, if your list is empty, if the list is empty, please understand that will my current code work? अगर जनरल केस का कोड लिस्ट इज एम्प्टी होगा तो ये काम करेगा क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सी यू आर सेइंग दैट न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. न्यू नोड, दिस वाज माय न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, ये वापस से नल हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहां पर आएगा? व्हेन आई से हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, हेड डॉट प्रीवियस, टेक अ लुक एट दिस, हेड अभी नल है, नल डॉट प्रीवियस अगर मैं करता हूं, it will straight away give me null pointer exception. So obviously it means that singly linked list में हमको कोई स्पेशल केस नहीं कंसिडर करना पड़ा था. सिंगली लिंक लिस्ट में हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड लिखा था और वो चल भी गया था. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये जनरल केस का कोड स्पेशल केस के लिए नहीं चल रहा है. नहीं चल रहा है तो आपको नया कोड लिखना चाहिए. ये नया कोड क्या लिखना चाहिए? इफ योर लिस्ट इज एम्प्टी, देन यू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इफ लिस्ट इज एम्प्टी, ऐसे केस में नए नोड के साथ मुझको क्या करना होता है? अगर आपका लिस्ट एम्प्टी है और आपने नया नोड क्रिएट किया है तो हमें क्या करना चाहिए? जो नोड आपने क्रिएट किया है उसी को फर्स्ट नोड मान लेना चाहिए, उसी को फर्स्ट नोड मान लेना चाहिए. जस्ट गो अहेड एंड यू मेक इट 100, दैट्स इट. ये जो नया नोड का एड्रेस है उसको हेड में डाल दो. दैट इज व्हाट योर स्पेशल केस. इफ योर लिस्ट इज एम्प्टी, सिंपली से head is equal to new node and nothing much you need to do. I guess it is clear. Who was asking the question? Someone was asking the question. All right. Yeah. Any trouble is there? You're welcome. Hoping that it is working for you. And we were talking about both adding at the last, adding at the first, things are going well. तो सर अभी बचा क्या? Again, go ahead. Add at position बचा हुआ है, delphus बचा हुआ है. So we will continue further. You can do bit of paperwork and you can think of how add at a given position should work. We'll take another break for 10 minutes, and after the break, we'll continue on that. Meanwhile, you have any questions, feel free to post. Okay, welcome back. What we are talking about, there is a question, head dot previous means previous of newly added node. Janvi, I was knowing that ये confusion होता है और ये confusion ना हो इसीलिए मैंने ये diagram draw किया था. I hope Janvi you can take a look at this diagram, and this diagram will tell you better that whenever we talk about previous, the previous always means the address of the previous node. It is the address of the previous node, not the previous part, not the next part. हम लोग पार्ट का एड्रेस नहीं लिख रहे हैं, हम लोग पूरे के पूरे नोड का एड्रेस रख रहे हैं. तो जब भी हम लोग कहते हैं कि इट इज प्रीवियस, किसी भी नोड का प्रीवियस, किसी भी नोड का प्रीवियस का मतलब होता है उस नोड के पहले जो नोड है उस नोड का एड्रेस, पूरे नोड का एड्रेस, नोड के प्रीवियस पार्ट का एड्रेस या नोड के नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस, ऐसा हम लोग नहीं कह रहे. ये जो 100 है, इट इज एड्रेस ऑफ द होल नोड. So the question that you had asked, head dot previous means previous of newly added node? No, not really. Head dot previous in this particular case, head dot previous should point to this base address of the whole node. It should point to the base address of the whole node, and that is what the code that is written is head dot previous is equal to new node. It is not written as new node dot next or new node dot previous. It should be null. Then for add first, previous is node class field, it should be null.
Then for add first, see what I'm saying is that when we are doing add first, Janvi, please pay attention. Anything is confusion is there, you are welcome, do ask. Head, when we are talking about, listen, head we are talking about, so head is pointing to the node 10. If you want to add a node at this moment head is null only. हेड का प्रीवियस एट दिस मोमेंट नल ही है, हेड का प्रीवियस यहाँ पर नल ही है। अब मुझको क्या करना है, मुझको एक नया नोड यहाँ पर ऐड करना है। जब मैं नया नोड ऐड करूंगा तो क्या होना चाहिए, इस नोड का नेक्स्ट हेड को पॉइंट करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, बट इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो हेड का प्रीवियस अभी जो नल है, जो ऑलरेडी नल है, अब मुझको उसको नल नहीं रखना है। आई वांट टू ऐड अ नोड बिफोर हेड। if I'm adding a node before head, then definitely this should point to this node, this should point to this node. So we need to say head dot previous is equal to new node. Are you getting Janavi? And once you have done that, उसके बाद में अगला स्टेप है, you make head is equal to new node. When you make head is equal to new node, obviously ये जो नया नोड बनाया था उसका प्रीवियस तो वैसे भी नल ही तो है, उसका प्रीवियस वैसे भी नल है, that is not at all a problem. The sequence in which we are doing is important, no problem. Next, any other questions are there? Yes, you are welcome. And if no question is there, I'm going ahead. We are still into the doubly linear linked list, and with the doubly linear linked list you talk about this is, let's say, head pointer, let's say it is pointing to 10, 10's next is pointing to 20, 20's next is pointing to 30, 30's next is pointing to 40, and 40's next is null. 40's previous is pointing to 30, 30's previous is pointing to 20, 20's previous is pointing to 10, 10's previous is pointing to null. And now I'm saying I want to add a new node. Where do I want to add a new node? I want to add a new node at, I want to add a new node in this position. What is that? Fourth position. So मुझको एक नया node add करना है, let's say 50. A नया node का value 50 है, and then new value. The new node's value is equal to 50, and then the position is equal to 4. This is my requirement. If this is your requirement, you go ahead. This is 50, and this is nothing but a new node. What is to be done next? What is to be done next? You continue further. All I want to do is that take a look at the diagram and try to understand. अगर 50 मुझको यहाँ पर ऐड करना है, बाय डिफॉल्ट इसका नेक्स्ट भी नल है, बाय डिफॉल्ट इसका प्रीवियस भी नल है, हमने कंस्ट्रक्टर में उसका नेक्स्ट और प्रीवियस नल किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझको कोड में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? फर्स्ट डायग्रामेटिकली टेक अ लुक एट दिस, व्हिच ऑल थिंग्स वी नीड टू डू। अल्टीमेटली सेटअप क्या करना पड़ेगा? यस, न्यू नोड का सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, नो डाउट, आई एग्री, आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो यू विल ट्रैवर्स टिल पोजीशन -1. oh, I will traverse till position -1, that is absolutely fine. This is done, traverse position -1. Then you continue further. New nodes next, new nodes next is over here, a new nodes next pointing to this, and new nodes previous is also pointing to this. I guess ये दो चीजें हमको सेट करनी है. And once, by the way, is it sufficient? New nodes next and new nodes previous. न्यू नोड का नेक्स्ट आपको सेट करना है ट्रैव के नेक्स्ट को, आई अंडरस्टैंड. न्यू नोड का प्रीवियस हमें सेट करना है 30 को, आई अंडरस्टैंड. बट इज दिस सफिशिएंट? इज दिस सफिशिएंट? और भी कुछ चाहिए आपको शायद? हाँ, और भी कुछ चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नया नोड ऐड कर रहे हो तो टोटल 4 पॉइंटर चेंज होने वाले हैं. यस, यू सी दैट ट्रैव का नेक्स्ट it should point to this, and at the same time the node 40's previous should also point to this. A 40's previous should also point to this. तो I guess हमें यहाँ पर 4 पॉइंटर्स के साथ खेलना है, 2 पॉइंटर के साथ नहीं खेलना है, 4 पॉइंटर के साथ खेलना है. Let us go step by step and try to understand the steps one after another. Very first step that I need to do is that, I need to first of all traverse till position -1, or traverse till position -1.
This is my first step. Okay, that is good. What is my second step? I would prefer, as I said that I personally do not like writing a code trav.next.next or trav.next.previous. ऐसे कोड मुझको अच्छे नहीं लगते. I just want to keep it simple. And to keep it simple, what I suggest is that we can have one more pointer. If we can have one more pointer to the next node after trav. मतलब जिन दो नोड के बीच में आपको ऐड करना है, तो यू कैन हैव वन मोर पॉइंटर टू दैट. सो एक पॉइंटर अभी मेरे पास ट्रैव पॉइंटर है, जिसके बाद में नया वाला नोड ऐड होना चाहिए, और बाद में दूसरा मैंने उसके आगे वाला नोड ले लिया है टेम्प, जिसके पहले मुझको नया वाला नोड ऐड करना चाहिए. नाउ आई हैव गॉट टू डिफरेंट पॉइंटर्स, सो आई कैन मेक द कोड बिट मोर रीडेबल. नाउ बाय लुकिंग एट द कोड, कैन यू प्लीज टेल मी अब मुझको क्या करना चाहिए. डायग्राम में मेरे पास ट्रैव है, मेरे पास टेम्प है, सो व्हाट शुड बी माय थर्ड स्टेप. व्हाट शुड बी माय थर्ड स्टेप. ऑब्वियसली पहले नए वाले जो नोड्स हैं, पहले जो नए वाले हैं, वापस एक बार, ऑलवेज फॉलो द रूल मेक बिफोर ब्रेक. तो जो नए वाले नोड्स हैं, इट इज गुड आइडिया कि पहले उनके नेक्स्ट प्रीवियस हैंडल कर लो, और उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग ट्रैव और टेम्प है उनको उसके बाद में चेंज करो. आई बिलीव दैट. सो लेट अस गो अहेड. ए न्यू नोड नेक्स्ट. ए न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होना चाहिए. आई सी दैट इट इज वेरी क्लियर. न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प. New nodes next is equal to temp, not temp previous. New nodes next is the address of a next node. 40 के अंदर किसका एड्रेस होना चाहिए, सॉरी 50 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, 50 के नेक्स्ट में 40 का एड्रेस होना चाहिए. सो यस, 50 नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प. डन. बाय द वे और क्या होना चाहिए, देन यू कंटिन्यू फर्दर. 50 के प्रीवियस में उसके पहले वाले नोड का 30 का एड्रेस होना चाहिए. सो न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल टू दिस इज डन. सेकेंड. थर्ड वन. अब व्हाट इज थर्ड स्टेप. अब ये ट्रैव और टेम दो बचे हुए हैं. ट्रैव का नेक्स्ट अभी अभी आपको मॉडिफाई करना है. गो अहेड, मॉडिफाई द ट्रैव्स नेक्स्ट. और ट्रैव्स नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. ट्रैव्स नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. एंड लास्ट थिंग, व्हाट इज द लास्ट स्टेप टू बी लेफ्ट. और एक पॉइंटर बच गया, जो आपका टेम्प है, टेम्प का प्रीवियस उसने वापस से 50 को पॉइंट करना चाहिए. सो दैट शुड बी लाइक स्टेप नंबर 6. सो स्टेप नंबर 1, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. स्टेप नंबर 1, you take a trav pointer and then you start traversing till position -1. Traverse till position -1. Oh, that is your first step. Take one extra pointer to make code readable, which is not really required, but just to make the code readable, you take temp is equal to travs next. Temp is equal to travs next. That is second. Third step. Step number 3. Step number 3. New nodes next is equal to temp. A new nodes next is equal to temp, and new nodes previous is equal to trav. New nodes previous is equal to trav. Okay, that is good. What is next step? अब बचे क्या, trav का next और temp का previous बचा है. So you simply say trav's next is pointing to new node. So this link is no more valid. आपने old link break कर दिया, नया वाला link set कर दिया. And finally, temp's previous is equal to new node. Temp's previous is equal to new node. Again आपने ये वाला भी link break कर दिया. Now you find that my linked list is clear. It's just now you can check that 10 के आगे 20 है, 20 के आगे 30 है, 30 के आगे 50 है, 50 के आगे 40 है. Look like my linked list is done good. Is this clear to everyone? Now if it is clear to everyone, let's move further. Let's move further and let's move further and try to talk in terms of code. Again, I would still recommend you go back and see the code of a linear linked list. Linear linked list में ऑलरेडी ये कोड लिखा गया है, एक्सेप्ट ये जो प्रीवियस पॉइंटर मॉडिफाई करने, कौन सा, न्यू नोड का प्रीवियस, ए दिस स्टेप, और टेम्प का प्रीवियस. ये दो लाइंस अगर आपने छोड़ दिए तो बचा हुआ सारा कोड ऑलरेडी वहां पर भी है. मैं फिर से बता रहा हूं, ये कोड ऑलरेडी वहां पर भी है. वहां पर सिर्फ हमने अलग से टेम्प नहीं लिया था, दैट इज द ओनली डिफरेंस. बट अदरवाइज इट इज द सेम कोड. यू कैन कॉपी पेस्ट इट and can add this step number 4 and step number 6. Rest extra आपको कुछ करने की जरूरत है ऐसा मुझको नहीं लगता है. If you could observe the code and if you could recall the code of what we are written earlier. So I'm just going back. Singly linked list, added position.
Sorry. Yeah. So go ahead and you do it one by one. You go ahead, do it one by one. What you're saying is that allocate a new node. Yes, we have done that. You want to traverse till position -1. Yes, we have done that as well. We have traversed till position -1. No problem so far. What is next? Then I'm saying that take take temp pointer to node after trav. It node after trav. So temp is equal to trav's next. Temp is equal to trav's next. So we have declared one more extra pointer. We have invested one more extra pointer. Temp is equal to trav's next. This is also done. What is next job? In new nodes next. अभी check करते हैं diagram कहाँ पर गया. So this traversing till this part is done. Temp is done. Third step, new nodes next is equal to temp. वैसे यहाँ पर हमने लास्ट टाइम वैसे कोड लिख के रखा हुआ है, new nodes next is equal to travs next. So that is nothing but simply just to make it more readable is equal to temp. वैसे travs next रखा तो भी चलने वाला है, no change. Third step, or the fourth step, new nodes previous is equal to trav. Let me add it there. So new nodes previous to trav. So new nodes dot previous is equal to trav. We have taken care of that. You continue further. You continue further. Step number 5. Trav's next is equal to new node. You find that trav's next is equal to new node. Already code is there. The last step that is left, what is that? Temps ये जो next वाला node है, इसका previous new node को point करना चाहिए. You go back. Simply say temps previous to new node. So you simply write a code temps previous is equal to new node. That's it. Is it sufficient? Yes, it is more than sufficient. No special coding is really required. तो अगर आपने ठीक से नोट किया, हम लोगों ने इफेक्टिवली दो लाइन्स ऐड किए. कौन कौन से दो लाइन्स ऐड किए? न्यू नोड का प्रीवियस का लाइन और टेम का प्रीवियस का लाइन. सर ये इतना सब कुछ याद कैसे रखेगा? ये याद मत रखना. अगर याद रख रहे हो तो टेक इट ग्रांटेड, आपसे लिंक लिस्ट कभी नहीं बनने वाला है. कीप इट वेरी सिंपल. ड्रॉ द डायग्राम. मैं सारे स्टेप्स आपके सामने करके दिखा रहा हूं. यू जस्ट फॉलो द सेम स्टेप्स. इट शुड गिव यू द रिजल्ट. तो सर अगर गलत हुआ तो होने दो. अगर गलत हो जाता है ट्राई इट अगेन. फिर गलत हुआ तो ट्राई इट अगेन. सो पहले ऑन पेपर तो सही कोड आना चाहिए. और जो आपने ऑन पेपर डायग्राम में ड्रॉ किया है, एक एक लाइन को मार्क करो. एक एक लाइन को जावा के कोड में कन्वर्ट करो. एक एक लाइन को जावा के कोड में कन्वर्ट करो. मैं फिर से एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं. प्लीज पे अटेंशन. Obviously, you need to always allocate a node. Yes, we allocate the node. इसमें कोई स्पेशल नहीं है, ये अभी तो आपको पता चल गया. हाँ, next step. You need to traverse. You need to traverse. What is the first step? Oh, actually, you need to traverse till the position -1. How to traverse till position -1? A code you already know. I is equal to 1, I is less than position -1, I plus plus, trav is equal to travel dot next. इससे हम लोग position -1 के ऊपर चले जाएंगे. So we got that. Not a problem. After that, if we want to see the node after that, oh, temp is over there after that. So we have taken one extra pointer. Temp is equal to travs next. That is also gone well. You continued further. अब मुझको क्या करना है? न्यू नोड के दोनों लिंक सेट करने हैं. न्यू नोड का नेक्स्ट टेम को सेट करना है और न्यू नोड का प्रीवियस ट्रैव को सेट करना है. अगर जो करना है, जो डायग्राम में ड्रॉ किया है, कोड में लिखो. न्यू नोड का नेक्स्ट टेम को सेट करना है, न्यू नोड का प्रीवियस ट्रैव को सेट करना है. दैट इज डन. यू कंटिन्यूड फर्दर. व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब टू बी डन? ओ बट ये लिंक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. ट्रैव का नेक्स्ट न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए और टेम का प्रीवियस वापस से न्यू नोड को आना चाहिए. ओके, ट्रैव का नेक्स्ट न्यू नोड को जाना चाहिए, टेम का प्रीवियस न्यू नोड को आना चाहिए. दैट्स इट. नथिंग एक्स्ट्रा वी नीड टू डू इट ओवर हियर. नथिंग एक्स्ट्रा वी नीड टू डू इट ओवर हियर. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो सर विल इट वर्क फॉर ऑल केसेस? नहीं, जनरल केस तो वर्क हो जाएगा. स्पेशल केसेस इफ यू आर एट ऑल लुकिंग फॉर, if your list is empty or the position is invalid position, you are directly calling add first function. तो वैसे भी हमको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. That logic will still remain same. प्रॉब्लम कब आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ.
देर आर लाइकली चांसेस, देर आर चांसेस देर विल बी प्रॉब्लम जब आप लोग लास्ट पोजीशन पे ऐड कर रहे हो, देर विल बी प्रॉब्लम जब आप लोग लास्ट वाले पोजीशन पे ऐड कर रहे हो। सर क्या प्रॉब्लम होगा, डायग्राम ड्रॉ करो, प्रॉब्लम समझो, और बाद में कोड का सॉल्यूशन आप मुझको बताना कि व्हाट, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल केस। व्हाट इज स्पेशल केस? Special case is that adding on last position, or rather adding on नहीं, add after last position. So जब last position के आगे ऐड करते हो there will be some problem. तो सर प्रॉब्लम क्या आएगा? कोड आपको कोड शेयरिंग के ऊपर दिख रहा है, कोड आपको कोड शेयरिंग के ऊपर दिख रहा है, जस्ट कीप एन आई ऑन अ कोड एंड देन यू सी कि कहां पे प्रॉब्लम आएगा। मैं पूरा डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। So you start with, let's say, head pointing to the first node 10, it is pointing to 20, this pointing to 30, this pointing to 40. All right, this is pointing to this is null, this is null. What you are trying to add? I am trying to create a new node. A नया node का value है let's say 50 और position है let's say 5. ये चार नोड मेरे पास ऑलरेडी है, चार नोड मेरे पास ऑलरेडी है, और पांचवें पोजीशन के ऊपर मुझको नोड ऐड करना है। सो इज इट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम? मैंने कहा ना, करके देखो, और जिस लाइन पे प्रॉब्लम आएगा उस लाइन के लिए सॉल्यूशन ढूंढो। अगर आपने कभी प्रॉब्लम ऑब्जर्व ही नहीं किया है तो सॉल्यूशन आने का कोई चांस नहीं है। फिर जब मेरा कोड खत्म हो जाएगा फिर कोई तो मुझको पक्का पूछेगा, सर वहां पर वो इफ कंडीशन आपने क्यों डाला? बेटर जब मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, लुक एट द प्रॉब्लम। ओके, इट इज 50, this is new node, oh that is good. What is to be done? नया node create किया, that was like very first step. Then you want to traverse till position -1. If you at all traverse till position -1, I guess trav will reach to this point. I understand trav will reach to this point, absolutely no issue. कोई मुझे को बताएगा in this case temp क्या रहेगा? अगला लाइन का आपने जो कोड लिखा है, अगला लाइन का जो आप लोगों ने कोड लिखा है, तो temp, a temp is nothing but trav's next. Temp is nothing but trav's next. So you find that the temp in this case will be null. I hope you understand. Temp is equal to null. कोड आपके सामने है, मैं अभी तक यहां तक आ चुका हूं। temp is equal to trav's next. So हम लोगों ने ट्रैवर्स किया पोजीशन -1 तक, and then I'm saying that temp is equal to trav's next, which is nothing but null. Which is nothing but null. Okay, you continue further. Now what you are saying, new nodes next. आपका अगला लाइन कह रहा है new nodes next is equal to temp and new nodes previous is equal to trav. Follow that. New nodes next is equal to null. A new nodes next is equal to null. A temp मतलब null है, there is no problem. New nodes previous is equal to trav. I guess इसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, this is still fine. वैसे भी न्यू नोड का नेक्स्ट नल ही करना था तो वो नल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू नोड्स प्रीवियस वो ट्रैव को पॉइंट करना चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन. Next line is saying that trav's next is equal to new node. Trav's next is equal to new node. Trav's next is equal to new node. Is it what you want to do it? Yes. Trav's next is equal to new node. This is what we want to do it. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. See the last line. What is the last line? Is there any problem? Is there any problem? Oh, there is a big problem that temp arrow previous, temp dot previous, array, it is a null pointer exception. And then by the way, so I understand that there is a null pointer exception. लेकिन मुझको ये बताओ, as far as diagram is concerned, pay attention to the diagram. As far as diagram is concerned, अगर मुझको 50 ऐड करना है, या अगर मुझको 50 ऐड करना है, तो मुझको एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए था? Do I need anything extra to be done? हेलो, डू आई नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा टू बी डन? ये नल टेम्प डॉट प्रीवियस, लिसन केयरफुली, टेम्प डॉट प्रीवियस क्या होने वाला है? टेम्प डॉट प्रीवियस वैसे भी आपको एक्सेप्शन देगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इफ आई डू दिस मच ऑफ कोड, ये मैंने पहला स्टेप क्या किया है, मैंने ट्रैव को ट्रैवर्स किया, ट्रैव को ट्रैवर्स किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कंटिन्यू फर्दर, यू से टेम्प इज इक्वल टू ट्रैव्स नेक्स्ट, ए टेम्प इज बिकमिंग नल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार, न्यू नोड के नेक्स्ट और न्यू नोड के प्रीवियस, ए न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट और न्यू नोड का प्रीवियस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड,
ए trav dot next is equal to new node. To be frank, अगर आप लोग यहाँ पर ठीक से देखते हो, ऑलरेडी आपका नोड ऐड हो चुका है. Is the node added at the position? टेक अ लुक एट दिस. अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? टू ऐड द नोड एट द पोजीशन, करना क्या था? ट्रैव के नेक्स्ट में न्यू नोड आना चाहिए था, न्यू नोड के प्रीवियस में ट्रैव आना चाहिए था, और वो ऑलरेडी हो चुका है. द नोड इज ऑलरेडी एडेड एट द पोजीशन नंबर 5 एज पर द एक्सपेक्टेशन. आर यू एबल टू सी दैट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वैसे भी ये जो लास्ट लाइन है, दिस लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस. जो लास्ट लाइन है, temp dot previous is equal to new node, that line is not required in this case, क्योंकि वैसे भी आपको जब लास्ट में नोड ऐड करना था, तो लास्ट में नोड करना था, तो लास्ट में कुछ है ही नहीं, तो उसका प्रीवियस वैसे भी आपको हैंडल नहीं करना होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And if you are getting my point, then all I need to understand is that this last line is to be just skipped, just considering the special case. What is that? If temp is not equal to null, a temp is not equal to null, then and only then, just make temp dot previous is equal to new node. So this condition is for your special case 3. While if adding at the end, if adding at end, next line is not required, that is what that is what your case is. That's it. And this is will ensure that my code is working in all possible cases. अगर आप लोगों ने ठीक से नोट किया होगा, लिंक लिस्ट में ऐसे ही होता है. हाँ, जयदीप इज सेइंग समथिंग. हाँ, प्रॉब्लम क्या है? लिंक लिस्ट में ऐसे होता है. स्पेशल जनरल केसेस पीपल ऑलवेज अंडरस्टैंड. द कॉर्नर केसेस, स्पेशल केसेस, you need to do a very rigorous paperwork, then you understand better. तो जयदीप, आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट. हमने ऑलरेडी लूप में से ब्रेक किया है, लेकिन जब उन्होंने इस लूप में से ब्रेक किया है, वी हैव इंश्योर्ड दैट trav dot next is equal to null. If trav dot next is equal to null, we came out of the loop. But due to that, Jaideep, I hope you are listening. Trav dot next is equal to null. I came out of that loop, and you simply say temp is equal to trav next. Now temp is equal to trav next. So your temp, जब आप लोग यहाँ से loop में से बाहर आओगे, इसका next already null है. और अगर इसका next already null है, इसका next already अगर null है, तो हमें क्या करना है? temp is equal to trav next, वो वैसे भी null ही रहेगा. I hope Jaideep you got that point. ए टेम्प वैसे भी नल रहेगा, और अगर वो नल रहेगा, तो हाउ नल डॉट प्रीवियस विल वर्क. एंड आई इवन डोंट नीड दैट लाइन जब आप लोग प्रीवियस चेक कर रहे हो तो. एंड दैट इज द रीजन दिस चेक इज देयर. सो दिस स्पेशल केस 3 के लिए मैंने ये दोनों लाइंस ऐड की है. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट. यहाँ पर भी मैंने स्पेशल नंबर 3 लिखा है, यहाँ पर भी मैंने स्पेशल नंबर 3 ही लिखा है, क्योंकि ये दोनों कोड एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है. द हाफ वे वी हैव हैंडल्ड ओवर हियर एंड द हाफ वे वी हैव हैंडल्ड ओवर हियर. यहाँ पर हाफ वे क्या हैंडल किया है? ताकि वो आगे वाली पोजीशन पे जाके उसको यही पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आ जाए. दैट इज हैंडल्ड एट दैट प्लेस. एंड देन जब temp डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, ये यहां पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आ जाए, दैट इज हैंडल्ड ओवर हियर. आई होप जयदीप आई हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम. नाउ और कुछ मोहन का कुछ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, विल टॉक अबाउट लाइन नंबर 125. लाइन नंबर 125, टेक अ लुक एट द डायग्राम. टेक अ लुक एट द डायग्राम. मोहन, यू अंडरस्टैंड दैट यहां पर न्यू नोड के साथ हमें क्या क्या सेटिंग करने हैं? न्यू नोड के साथ क्या क्या सेटिंग करने हैं? न्यू नोड का प्रीवियस हमको ट्रैव को पॉइंट करवाना है, और न्यू नोड का नेक्स्ट हमें ट्रैव के बाद वाला मतलब टेम को पॉइंट करवाना है. दैट्स इट. दैट इज व्हाट लाइन नंबर 125 सेइंग दैट न्यू नोड डॉट नेक्स्ट is equal to temp. Even in a special case, when temp is equal to null, that line doesn't still create any kind of issue. Yes, new node next is already null. Yes, whatever you are saying is correct, Mohan, but that is only for a special case. Only for a special case. मुझको यहाँ पर null नहीं करना है. Please take a look at this. In this case, new node next is already null. You are talking about a special case over here.
न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, एंड देन ये वापस से लिखोगे तो वैसे भी लिख के वापस से नल ही ओवरराइट होने वाला है. वॉट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट फॉर द स्पेशल केस, व्हाट अबाउट द जनरल केस? जनरल केस में आपका टेम्प नल नहीं होने वाला है. जनरल केस में यू वांट टू ऐड अ नोड, आफ्टर दैट जो नल है आपको उसकी जगह पे अगले नोड का एड्रेस देना है. सो वी नीड टू हैव अ कोड ओवर हियर. आई होप दैट इज क्लियर नाउ. गुड. और भी आपको भी कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क. गो अहेड, ट्राई टू कंपाइल, ट्राई टू रन इट. ये चेक करके देखो वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू. नीचे एडेड पोजीशन का जो कोड था कॉल करने का, उसको कमेंट कर लो, एंड यू कैन ट्राई टू रन इट वंस अगेन. So let me add some nodes first. 10, 20, 30. All right. And display, yes, 10, 20, 30 is there. I want to add at the position. Let's say पहले जनरल वाला कोड, मुझको थर्ड पोजीशन के ऊपर, सॉरी 3 मैंने ऐड कर दिया. ठीक है, थर्ड पोजीशन पे मुझको 3 ऐड करना है. थर्ड पोजीशन पे मैंने मुझको 3 ऐड करना है. सो यू फाइंड दैट 10, 20 थर्ड पोजीशन के ऊपर मैंने 3 ऐड कर दिया. यस, इट इज वर्किंग वेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट what if आई एम ट्राइंग टू ऐड बियॉन्ड द पोजीशन. अच्छा, वो तो हमको चेक करना चाहिए था, जिसके लिए अभी इतना राड़ा कर रहे थे हम लोग. सो ऐड एट पोजीशन, एडिंग अ न्यू एलिमेंट, लेट्स से 50, एंड आई एम सेइंग दैट पोजीशन इज इक्वल टू 10. पोजीशन इज इक्वल टू 10. 4 नोड के लिंक लिस्ट में पोजीशन इज इक्वल टू 10 है ही नहीं, राइट? सो इन दिस केस इट शुड बी एडेड एट द एंड, ऐसा हमारा कहना था. सो यू फाइंड दैट यस, ऑलरेडी 4 नोड थे. ऑन अ फिफ्थ पोजीशन आई फाइंड दैट 50 is added. So look like the code that I had written is working well. Go ahead, copy paste, run it, check if it is working. Any special cases that you want to confirm, sir ये कोड चलता है, इस केस में नहीं चलता है, आप डेटा एंट्री करो और आप चेक करके देखो. I hope that is okay. Travis next is nothing but 10. Good. So we were talking about adding a node at a given position. Now let us just complete the formalities, rest of the formalities, which are saying that I want to delete the node at the given position. Oh, how do you want to delete the node at a given position? So delete the node at a given position, or for that sake, I'll simply say delete first. पहले वो वाला delete first वाला फंडा clear कर दे. So it is delete first, and how it goes. Let me go ahead. Delete first. I guess ये इतना ज़्यादा complicated नहीं रहना चाहिए. Let's see. It is 10, 20, 30, 40, and yes, this is going well. Hey, what is to be done? अगर मुझको पहला वाला नोड डिलीट करना है, what all changes I need, this node is to be deleted. But if this node is to be deleted, what all changes should happen? Can you take a look at the code? Look at the diagram first. What all changes to be done over here? क्या होना चाहिए? In this case, क्या होना चाहिए? Obviously, head should start pointing to the second node. Head should point to the second node. और कुछ होना चाहिए? Head should point to the second node. That is true. और कुछ होना चाहिए? Exactly. Since your 10 is deleted, you find that it should point over here. So there are two conditions I need to take care. एक तो पहली चीज तो head should go onto the second node, and second, now this is the extra part,
that we need to consider where we say that इसका previous यहाँ पर आना चाहिए. That's it. तो सर और कुछ करना है? I don't think कि और कुछ करना है. Now go ahead. Something similar code already you people have written. Already you people have written into the singly linked list. Singly linked list. Okay. Yeah, Delphus code. Delphus code, there are couple of special cases. Actually हम लोगों ने एक ही special case लिखा है. कोई बात नहीं. ठीक है. Head, make head pointing to the next node. Done. ये already है यहाँ पर, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. And then, what is the extra step to be done? I'm saying that the second node that is nothing but new heads. A new heads previous should be null. वो ऑलरेडी प्रीवियस नोड को पॉइंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नोड कभी भी गार्बेज कलेक्ट नहीं हो पाएगा. ऑल आई नीड टू डू इज दैट हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल. हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल. So will it work for all the cases? Will it work for all the cases? We can find out whether it is working for all the cases or not. Any special case to be considered over here? Yes, Abhaya, that is correct. There will be issue with this one or two cases. As far as if your list is empty, if the list is empty, if head is equal to null, then if head is equal to null, then yes, it is simply throwing an exception. Good thing is that this special case is already handled. If head is equal to null, then throw runtime exception, list is empty. ये हमने already handle कर लिया है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. You go on to the next one. What if your linked list has got a single node and it is like a doubly linked list, so has got a single node where इसका next भी null है, previous भी null है, next भी null है, previous भी null है. Now in this particular case, will this code work? Please check. Will this code work if you have got a single node? If you have got a single node, I guess there will be problem at a place. कौन से केस में प्रॉब्लम आएगा? I believe head is equal to head dot next में शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा, but head dot previous, oh, head dot previous is equal to null, this will create a problem. क्योंकि जब आप लोग कहोगे, have a look at this, जब लोग कहोगे head is equal to head dot next, head will become null. अगर आपने कहा head is equal to head dot next, head will become null. And if head become null, then null's previous, it will give me null pointer exception at that line. So I understand that this is not a good idea that I need to do. So I need to consider one more special case. What is one more special case? If list has single node, if list has single node, I say that make head null. That is what all I need to do it. So simply say that head is equal to head next. What is the meaning of this? नहीं सॉरी, ये हम लोग सर्कुलर नहीं कर रहे हैं. हेड डॉट नेक्स्ट, ये सर्कुलर नहीं चल रहा है अपना. हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. It simply means that this node is a single node in a list, and if it is a single node in a list, go ahead, write it head is equal to null. Head is equal to null. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. This is nothing but your Delphus code. Again, right? अभी लीनियर में भी हम लोगों ने, सॉरी सर्कुलर में भी हम लोगों ने ये वाला स्पेशल केस कंसीडर किया था. सर्कुलर में हमने दो स्पेशल केसेस कंसीडर किए थे. एक तो लिस्ट एम्प्टी होगा तो वो, दैट इज वन स्पेशल केस, एंड इफ यू हैव गॉट अ सिंगल नोड, दैट वाज लाइक वन मोर स्पेशल केस दैट वी हैड ऑलरेडी सीन. ओके, एंड इफ आई अंडरस्टैंड दैट Delphus, you can just check whether everything is going well. You can add few nodes and you can test it. Sorry, 3 and 30, 8 and 20, 30, it is going good. Let me say del first 5, del first 10 is deleted. What happened? Yes, 10 is deleted. Again del first 5, again 20 is deleted. Or एक del first, this is like a single node special condition we are talking about. I guess something we had done wrong. Something that we had done wrong. What happened? अच्छा else part लिखना रह गया. Oh, sorry.
General case has to be written in a else part. Silly mistake, very silly mistake. I hope you people got the point. Yes, else रह गया. That was a mistake. No problem. फिर से एक बार ट्राई करते हैं. आप लोग भी ट्राई करो. Go ahead. And what you are trying to do is that add last. So 3, 10, 3, 20. बस बहुत हो गया. Display 10 and 20 is there. 5. Del first. Display 5. Done. It is still there is error. हाँ, डिस्प्ले रिवर्स नीड टू बी मॉडिफाइड. ये शुभम, वॉट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट. ये आपका फॉरवर्ड डिस्प्ले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. योर फॉरवर्ड डिस्प्ले स्टिल गोइंग गुड. रिवर्स डिस्प्ले में हम लोगों ने स्पेशल केस कंसिडर नहीं किया है. प्लीज नोट, जो फॉरवर्ड डिस्प्ले किया था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस कोड हैज डन वेल. फॉरवर्ड डिस्प्ले इज वर्किंग वेल. रिवर्स डिस्प्ले एम्प्टी कंडीशन वाज नॉट चेक्ड. रिवर्स डिस्प्ले में एम्प्टी कंडीशन इज नॉट चेक्ड. अगर आपने नोट किया, एंड दैट इज द रीजन इट वाज गिविंग मी द एक्सेप्शन. So probably I should have checked it earlier. What is that? If head is equal to null, if head is equal to null, just say return. Or if it is like an empty list, special case, if empty list, nothing to do, return. Chalo, go ahead, run it. Yes, Pankaj, whatever you are saying is correct. Empty is not handled over there. Can you please try it? Check it if it is working. And after this, we will go on to the last function for today. Working fine? Good. Thanks, Jaideep, for confirming. I'm hoping that a lot of people they found that this is going too heavy, sir. आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, and we find that sir आज बहुत हम लोग linked list पढ़ लिया. If you at all find that, then I would only say that this is a prerequisite of our course. You might have done into any other language. कोई Java is not a prerequisite, but I'm very sure you might have done in a C, you might have done in C++ or any language. Data structure was a prerequisite of this course. अब already ideally I should not have spent more than 4 hours on a linked list. वैसे कल हम लोगों ने 2-2.5 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए. आज वापस से ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का लेक्चर है, एंड वी हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट एंटायर सेशन ऑन टू द लिंक लिस्ट. अब इससे ज्यादा अगर मैं स्लो करूंगा, then there are likely chances are that we will not be able to justify the topics on like advanced linked list. और वैसे भी मैंने बताया ना, मैंने कितना भी स्लो किया, that is not a solution to the problem. Solution to the problem is only one. If you are at all finding it heavy, doing papers work by yourself. लिंक लिस्ट खुद से पढ़ो, मुझको पढ़ाने के लिए मत बोलो. जो टेक्निक मैंने आपको बताया, जस्ट सिट विद पेपर, पेंसिल एंड योर कंप्यूटर, डू पेपर वर्क, कम अप विद दिस. तो जो कुछ भी हम लोगों ने इस क्लास में किया है वो आपको खुद को करना चाहिए. जिस दिन आप ये खुद से कर पाओगे, यू विल फाइंड दैट ओह दिस इज वेरी इजी जॉब. आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट. नहीं तो आप बोले सर आपको कैसे पता चला? वी आर फाइंडिंग इट वेरी हेवी. when class was started, there were around 340 students were there. Almost 340-45 students were there today. So almost 20-25 people are no more there. So it look like hoping या तो उनके घर पे लाइट चला गया होगा, उनका नेट गया होगा, या फिर उनका लिंक लिस्ट गया होगा. आई रियली डोंट नो. कुछ ना कुछ तो गया होगा, दैट इज फॉर श्योर. बट इफ एट ऑल यू आर फाइंडिंग दैट this is going heavy, please do the paperwork. Do the paperwork and come up with your own solution. And I'm very sure your solution will be similar to mine. Similar, I'm not saying that exactly same. There can be alternate options available that are absolutely possible. I hope you people are understanding what I'm trying to say. And if it is so, we will go ahead. We will go ahead and talk about, as I said, that we'll go on to the last part, last demo that I want to do it over here. What is the last demo that I want to do it over here? The last demo that I want to do it over here, delete at a position.
And this is very interesting kind of code. Very interesting kind of code. Let us do that much and you find how and why it is interesting. See it carefully. If you have a head pointer pointing to the first node, continue. This is pointing to 20, this pointing to 30, this pointing to 40, null. 40 is previous, 20 is previous, this is done. You continue further. What exactly you want to do? Let's say I want to delete a node at the third position. Oh, this is a node that I want to delete. So what should be my very first step? What should be my very first step? Obviously, I want to traverse up to that particular node. I want to traverse up to that particular position. So I traverse up to that position. Now, good thing over here, please pay attention. Good thing over here, in my opinion, there is no need that you have a temporary pointer over here. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक टेम्पररी पॉइंटर लिया था और वो क्यों लिया था? क्योंकि हमको पीछे के नोड का नेक्स्ट मॉडिफाई करना था और हमें ऐसा कुछ तो करना था एंड दैट इज द रीजन हम लोगों ने उसके पीछे एक टेम्प पॉइंटर उसके पीछे लेके गए थे. नाउ यू रियलाइज दैट ये करने की अभी जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ईच नोड हैज गॉट पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एज वेल एज पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड. अगर आपके पास ट्रैव है तो ट्रैव से आपको प्रीवियस नोड ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा. एम आई करेक्ट? इसको आपको ऑटोमेटिकली प्रीवियस नोड मिल ही जाएगा. जस्ट बाय सेइंग ट्रैव डॉट प्रीवियस यू आर एबल टू एक्सेस द प्रीवियस नोड. तो अलग से टेम्प का पॉइंटर चलाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, दैट इज गुड. एंड देन नॉट ओनली दैट, आपको ट्रैव का जो नेक्स्ट है यहां पर एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? ये जो 40 है, 40 के प्रीवियस में आपको 20 का एड्रेस डालना पड़ेगा. 40 के प्रीवियस में आपको 20 का एड्रेस डालना पड़ेगा. दैट इज एक्स्ट्रा थिंग दैट यू नीड टू डू, राइट? सो आपको दो चीजें करनी है. सो माय फर्स्ट थिंग, हैव अ लुक एट दिस. व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? ट्रैवर्स till position. Traverse till position is the first thing. And after that, then what is that? The previous, see it carefully what I'm writing. Previous nodes next should point to to traverse the next. I hope you are getting the point. What I'm saying is that ये जो 30 है, 30 के प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, प्रीवियस नोड है 20, उसका जो नेक्स्ट है दैट शुड पॉइंट टू द ट्रैवर्स नेक्स्ट. That should point to the traverse next, right? And the second thing, go ahead. The next nodes previous to traverse previous node. A traverse previous node means, again what I'm saying, please pay attention. ये जो ट्रैव आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस नोड के जो भी आपका नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड आपका 40, द 40 का जो प्रीवियस है, 40 का जो प्रीवियस है दैट शुड पॉइंट बैक टू दिस, राइट? सो नेक्स्ट नोड्स प्रीवियस, 40 का जो प्रीवियस है वो ट्रैव के प्रीवियस नोड को, ट्रैव का प्रीवियस नोड मतलब 20 को पॉइंट करना चाहिए. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन. और कुछ गड़बड़ लग रहा है तो अभी बताना, कोड लिखने के बाद में कंफ्यूज मत होना. व्हाट आई एम सेइंग, यू ट्रैवर्स टिल द पोजीशन, सो यू कैन स्टार्ट. आपको टेम्प नोड की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड देन यू कैन ट्रैवर्स टिल द पोजीशन. सो आई गॉट द पॉइंटर टू द नोड टू बी डिलीटेड. इफ दिस इज अ नोड टू बी डिलीटेड, व्हाट आई नीड टू डू, इस नोड का जो प्रीवियस नोड है, इस नोड का जो प्रीवियस नोड है, इसका जो नेक्स्ट है, इट शुड पॉइंट टू द ट्रैवर्स नेक्स्ट नोड. इट शुड पॉइंट टू द 40. सिंपल भाषा में 20 के नेक्स्ट में 40 आना चाहिए. सिंपल भाषा में 20 के नेक्स्ट में 40 आना चाहिए. सो आई एम सेइंग दैट प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में ट्रैव का नेक्स्ट मतलब ये आना चाहिए. आई अंडरस्टैंड दैट. और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, जो 40 मेरे को दिख रहा है, 40 के प्रीवियस में वापिस से 20 आना चाहिए. मतलब जो नेक्स्ट नोड का जो प्रीवियस है,
ट्रैव के नेक्स्ट नोड, ए ट्रैव का नेक्स्ट नोड मतलब 40, 40 का जो प्रीवियस पॉइंटर है, 40 का जो प्रीवियस पॉइंटर है, दैट शुड पॉइंट टू द ट्रैव्स प्रीवियस नोड, that should point to the Trav's previous node, which is nothing but the 20. This is what all you need to do. That's it. This is the only code that you need to write. So is it so? Yes, it is so. Nothing much is there. Nothing much is there. Yes, Malika, that is correct. No, not correct. Previous next is equal to Trav's next. Yeah, ठीक है. Trav's next previous is equal to Trav's previous. Malika, your second line is wrong. Okay, you just go back. You just go back and you try to write it like this. Whatever that you are saying, why don't you try it once again? So delete at a given position, delete at a given position. I don't want any temp pointer. I do not want any temp pointer. I just want to traverse till the position. I just want to traverse till the position. Yes, I traverse till the position. Trav is equal to trav dot next, and I reach to that node. Once I traverse till the position, now what I'm saying is that, let me write it over here. हाँ, क्या कह रहे थे हम लोग? ट्रैव के ट्रैव्स previous nodes, a trav's previous nodes next to trav's next node. Trav's next node is the first thing, and second we are saying trav's next nodes previous to trav's previous node. It done. You go ahead and start doing it. Travs, what you're saying? Previous node. Trav.prev is nothing but the previous node. Going back to the diagram, trav.previous is nothing but, I'm talking about the node 20. I'm talking about the node 20. Node 20 का जो next part है, node 20 का जो next part है, okay, let us go ahead. मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, node 20 एक वर्ड लिख रहा हूँ. ट्रैव नेक्स्ट का जो प्रीवियस नोड है 20 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो कहां पर पॉइंट करना चाहिए? ट्रैव के नेक्स्ट नोड में. वो ट्रैव का नेक्स्ट नोड कौन सा है? वो 40. सो वो यहां पर पॉइंट करना चाहिए. ओके, इफ यू आर सेइंग सो, गो अहेड, राइट इट ट्रैव डॉट नेक्स्ट. ऑल राइट, यू कंटिन्यू फर्दर. अब आप लोग क्या कह रहे हो? ट्रैव का जो नेक्स्ट नोड का जो प्रीवियस है, ये ट्रैव का जो नेक्स्ट नोड है, इट इज 40. 40 का जो प्रीवियस पॉइंटर है, 40 का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो कहां पर पॉइंट करना चाहिए? इट शुड पॉइंट बैक टू द ट्रैव्स प्रीवियस. It should point back to the trav's previous. That trav previous is nothing but the 20. Okay, that is good. So you simply say that trav's next dot previous is equal to trav's previous. That's it. So और कुछ करना है? If there is no special case, then कुछ नहीं करना है. If there is no special case to be considered, कुछ नहीं करना है. You are able to delete a node at a given position. So are you sure? मैंने कहा ना, except the special case, this should work. Except the special case, it should work. Let's go back and try to run this. Let me add a node 10. Let me add a node 20. Let me add a node 30. Let me add a node 14. And then I'm displaying, yes, 10, 20, 30, 40. Things are going good. What is the next job to be done? Next job, I want to delete, let's say, node at the third position. 7, and I'm trying to delete a node at the third position. So I guess 30 it was. 30 is deleted. Oh yes, you find that 30 is deleted. Well, there is no problem. Sir, अगर मैं पहले पोजीशन का नोड डिलीट किया तो will it work? Yes, it will also work. आप चिंता मत करो. 10 is deleted. So you find that now it is 20 and 40. तो सर प्रॉब्लम कहां पर आएगा? प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर आएगा जहां पर आप लोग लास्ट नोड डिलीट कर रहे हो. हमारे केस में लास्ट नोड इज 40, and when you are trying to delete 40, there will be problem. Let's see what problem that you see. A null pointer exception. Good thing. Let's see that I want to delete at the second position, and here you find that there is a issue. There is a problem with the null pointer exception, and then it is behaving bit abnormally. So ऐसा क्यों हो रहा है? डायग्राम ड्रॉ करो, आपको पता चल जाएगा. अगर आप लोग
लास्ट नोड को डिलीट करने की कोशिश करते हो, then there going to be a problem. See that if we have got like a head is pointing to 10, this is let's say 20, this is let's say 30. Okay, this is null, this is null. जो कोड आपने लिखा है उस कोड के ऊपर फोकस करो. You talk about a you traverse till this, you traverse till this, so you traverse till the node. I traverse till the node. What is the next job to be done? Now you are saying that इसका जो previous है, इसका जो previous है, इसका previous है 20. 20 का जो next pointer है, 20 का जो next pointer है, it should point to the next. A next तो null है, इसका next तो null है, so that is not a problem. That is not a problem. This will still work. But there is a problem on the next line. What is the problem on the next line? ये जो 30 है, अब आपको क्या करना है? 30 का आपका अगला लाइन का कोड क्या लिखा है आपने? नेक्स्ट नोड्स प्रीवियस टू द ट्रैवर्स प्रीवियस. वो 30 का जो नेक्स्ट नोड है, ये 30 का नेक्स्ट नोड कोई है क्या? डू यू हैव एनीथिंग इन 30s नेक्स्ट? सॉरी, you do not have anything in 30s next. 30s next is null. अगर null का अगर आप लोग previous access करोगे, अगर आप लोग null का previous access करोगे, definitely this is going to give you null pointer exception over there itself. I hope you are getting the point. और वैसे भी ये वाला नोड अगर आपको डिलीट करना है तो अगले लाइन की जरूरत ही नहीं है. जिन लोगों को एडेड पोजीशन वाला जो लास्ट वाला स्पेशल केस अगर आपको समझ में आया था, एग्जैक्टली अब जो लास्ट वाला आपको प्रॉब्लम समझ में आया था, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट इज देयर. सो आई एम सेइंग दैट इन अ स्पेशल केस, if it is the last position, if it is the last position, you need not to worry about. So what I'm saying is that special case number 3, if trav dot next is equal to null, if trav dot next is sorry not equal to null, then and only then you want to delete this. So I'm saying that special case number 3 जो ऊपर लिखा था उसका continuation नीचे है. What is that? While deleting last node, skip next line. So उसकी कोई जरूरत नहीं है. Next line is not needed. Next line is not required. That is something in front of you. Similar comment मैंने नीचे ऊपर added position जो था मैंने वहां पर भी लिखा है. So you can always go there and you will find that it is exactly similar case we have followed once again. I believe that is more than sufficient. सर अभी क्या बचेगा? हम लोगों ने एक add last बच गया है, that delete last. So again that is your lab assignment. What is that? Delete last. ये आप लोग करो. और एक चीज, जो लास्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट. व्हाट इज डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट? वेर यू सिंपली से दैट कि फर्स्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड. डायग्राम आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है. एंड लास्ट नोड्स नेक्स्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट ओनली मीन्स दैट इन दिस होल कोड जहां पर आपको लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करना पड़ा था, इस पूरे लिंक लिस्ट में, इस पूरे कोड में जहां पर आपको लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करना पड़ा था, टू बी फ्रैंक, जब लोग डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज करते हो आपको ये ट्रैवर्सल नहीं करना पड़ेगा. जब लोग डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट करते हो आपको ये ट्रैवर्सल नहीं करना पड़ेगा. यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन अ लास्ट नोड. So how do I directly jump on last node? It is a doubly circular. So simply saying head dot previous, it will take you to the last node. So ये जो आपका पूरा लूप था, ये पूरा का पूरा लूप skip हो जाएगा. That's it. So I'm going to give it as again a work for you. अब आपको जो सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट, सॉरी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट आज आप लोगों ने पढ़ा है, आपको उसका पेपर वर्क करना है, उसका कोड बनाना है. डबली लिंक लिस्ट जो किया है उसका पेपर वर्क करना है, उसका कोड बनाना है. और बाद में डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट अगेन गो अहेड, इट इज जस्ट अगेन अ पॉइंटर मैनेजमेंट. जिसने जिसने सर्कुलर लिंक लिस्ट ठीक से किया है, जिसने डबली लिंक लिस्ट ठीक से किया है, आइडियली दैट पर्सन शुड नेवर हैव अ ट्रबल फॉर अ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट. So again, don't go for even code level, do the paperwork, you will automatically understand कि आपको जहां पर traversing till last की जरूरत है, that part is actually skip. Simply saying head dot previous, you are jumping there. बचा हुआ code, it is always a combination of a doubly and a circular. Doubly and circular.
और आई नो दैट ये सब कुछ करने के लिए आपको टाइम लगेगा, एंड दैट इज द रीजन जब मैंने लेक्चर्स प्लान किए थे, मैंने प्लान ऐसे किए थे कि पहले 3 दिन में हम लोग लगभग लिंक लिस्ट तक पहुंच जाएंगे, और आगे सैटरडे संडे आपको थोड़ा टाइम मिलेगा. आई एम होपिंग दैट you will be utilizing your Saturday and Sunday for doing these 3 linked lists: singly circular, doubly, and doubly circular. Paperwork and then coding, go ahead, do that. If any doubts are there, Monday we will discuss that. Monday we will discuss that. So now, by design, I have ensured that you will get enough time. लेकिन टाइम उनके लिए है जो लोग उसको यूटिलाइज करते हैं. इवन द पर्पसफुली कल के लेक्चर में मैंने सिंगली लिंक लिस्ट खत्म किया था, सो दैट बाय व्हेन यू कम डाउन टू द सेशन यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि चलो सिंगली लिंक लिस्ट का सर पूरा पेपर वर्क हो गया, नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर, सो दिस लेक्चर शुड नॉट टेक मच ऑफ टाइम. एक्चुअली दिस हैज टेकन मच मोर टाइम देन आई वाज एक्सपेक्टिंग. वैसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी लॉकडाउन में मेरे साथ ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर एक बार किया हुआ है, एंड देन दे फाइंड दैट ओके सर अभी आप बहुत स्लो जा रहे हो. इट इज डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स, नथिंग मच आई कैन डू. एनीवे, इतना काफी है, ऑलरेडी बहुत हो चुका है. If anyone has got doubts, they can wait. Rest all, they can leave. Bye bye. Take care. See you on Monday. Yeah, please paper. Paperwork should make it clear, no doubt on that.